How are you, my children? I wish, I hope, I guess all of you are very well, and you are more and more eager to also learn a new thing. So today, I am not going to teach you any subject, any topic, any grammar, any science, or anything. I am going to tell you today about some tips for the examination purpose. How you can get a good marks in the examination, how you can give the answer of all the questions, how you can also prepare for yourself in the examination, and what type of the answer how, you can give so that the answer will be also very bettable. Some you can hear very attentively, very carefully, and you can also own this type of the tips in your life during the examination period or during the study period. Then definitely you can do better in your life, and you can also get a success in your life, and you can own these tips or types of the study and types of writing. Then definitely in future you can also do better, and your future will be bright also. So first of all, how we can study. The value of all the subjects are same, and all of the subjects have also fixed mark, equal marks. So you have to get the maximum marks in all of the subjects. The students who are very intelligent in mathematics, so definitely he or she can do better, because by solving again and again the mathematics, he or she has applied his mind, so that her mind also becomes larger and larger, and the other subjects will also be very easy for them. That one who is weak in mathematics, so it is very problem for those students to also learn or to understand the other subjects. So mathematics is the main subject for all the students. So all of you, first of all, you have to take more and more attention on the mathematics, so that you can also solve all of the problems related to the maths, and then you can try again and again, and definitely you can apply your mind more and more time. And in this way, your mind will be also very frequent, and you can do better, and you can write better, and you can also solve better way all of the subjects. First of all, when you get a preparation, you are going to preparation for the examination purpose. So first of all, every type of the question you can make yourself, and also try to give the answer in your own words, not in the language of the book and language of the written by any teacher. So you try to give the answer in your own language. My dear students, you see, you hear, when you get a question paper, the first line it has been written, answer the question, answer the question by candidate in their own language. It means here is not also limitation of the language. Different type of the student can give the answer in the different way, but the topic only will be same. The language will be other types. The language you can change, but the topic will not be changed. It means first you read the question paper, and after reading the question paper you can guess yourself that how many questions I can solve myself, and there is no any type of the obstacle to solving this problem. So first of all, you can solve all of those questions, those problems that you can know very well. After that, if you begin to write, you begin to give the answer of the another question, then
then you can find the answer in easy way the other question. And during the time of the giving answer, you can also add in the first sentence, you have to use a type of the language, and after giving this language, the teacher can be also attracted by your answer. Suppose any question will be related to the motion. So in motion means Newton's law of motion. So if you can give the answer of this question, then you can write in the first according to Newton's first law of motion, according to the second law of motion, according to the third law of motion, according to moment of inertia, according to your according to motion, according to density, on the basis of density, on the basis of flotation, on the basis of buoyancy, like so on. It means in this way you can give the answer. That definitely you can write very well, and you can also give the answer in a short way, but it is also very nice way, and then you can get a good marks in the examination. So suppose also mathematics. So in math also, according to this one, according to this theorem, all of the geometry you can solve. So in the solving during the geometry, you can write also according to this theorem, according to your BPT, according to midpoint theorem, according to a straight line, according to a straight angle, according to supplementary angle, according to complementary angle. So like this one, you can solve also mathematics in this way. And during the science time, science, you have to give the answer on the basis of the chapter, so that the teacher can take the copy and they can guess that the student is fully prepared. Student is fully prepared for and also is fully know this subject, know this answer of the question, and they can also give the answer of this question very well. So always remember what I am going to say you, and what I am going to also tell you to do. तो you remember also and you can do better. बच्चों, एग्जामिनेशन पढ़ाई करना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में मार्क्स लेना एक अलग चीज़ होता है। तो आप लोग ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ करके उससे ध्यान से देखेंगे कि इसमें जितने परसेंट हम अपने आप को फुल्ली कॉन्फिडेंस है इतने आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे पहले लिख डालिए। उसके बाद जो थोड़ा आपको कोई में सस्पिशियस हो रहा है, सस्पिशन हो रही है, शंका है कि इसमें हम फुल्ली कन्फर्म नहीं है, तब उसके बाद लिखना शुरू कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो बात आपको आ जाएगी, सब्जेक्ट मैटर आ जाएगा और उसको भी आंसर दे सकते हैं। रह गई बात, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, डायरेक्टली आपको चैप्टर से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन कुछ अल्टरनेटिव क्वेश्चन 20% क्वेश्चन विल बी ऑल्सो गिवन अल्टरनेटिव बाय द बोर्ड और बाय द काउंसिल, and 60% question are related to the topic, to the chapter also, but 20% questions are related to the alternative questions, so that the students can give the answer by their skilling power, not on the basis of the chapter, but they have to also own a skilling power, and अपने स्किलिंग पावर पर उसको आंसर देना होता है। जैसे एजर्सन है, रीजन है, तो ये सब क्या है, ये सब इसका मतलब होता है कि आप बढ़िया से पढ़िएगा तभी आपको आंसर दे सकते हैं। तो ऐसी हर सब्जेक्ट में है, ऐसी बात नहीं है। तो ये आपको हमेशा एग्जामिनेशन पर्पस की तैयारी करना है, तो सबसे पहले चैप्टर को पूरे पढ़ना होगा। पढ़ करके क्वेश्चन अपने आप बनाइए और अपने आप उसको आंसर देने का प्रयास कीजिए। उससे क्या होगा कि आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। रटने वाली विद्या क्षण भंगुर होती है। रट करके कभी एग्जामिनेशन में जाने से अगर कहीं भूल गए तो वो आप लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए उसको पहले समझिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको समझिए और समझने के बाद अगर उसको एक बार या दो बार अपने आप से लिख डालते हैं तो वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके रह गया आपको एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में करते करते अभ्यास करते करते कुछ ऐसे प्रश्न होंगे कि अपने आप सॉल्व हो जाता है आपको।
तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर चैप्टर बढ़िया से समझ लिए, पढ़ लिए, तो ऑटोमेटिक है कि उससे जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल स्पष्ट आ जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बच्चों ध्यान दें, और ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो अवश्य ही आप अच्छा करेंगे और परीक्षा में एक अच्छे मार्क्स भी। दूसरी बात है कि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना ज़्यादा नहीं चाहिए। जो एक्यूरेट जो बात होती है, जो एक्यूरेट जो आंसर होती है, उसी आंसर को आप लिखें, उससे ज़्यादा भागे नहीं और उससे कम भी नहीं जाए। हाँ, अगर टॉपिक अगर उसमें आपको एक टॉपिक अगर आप जानते हैं तो टॉपिक को आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्लेन योर सेल्फ एनी टॉपिक ऑल्सो। बट मैथमेटिक्स इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। एक मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। इसमें हाँ यह है कि फार्मूला यूज करके उसको सोल्व कर लीजिए तो वो आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। उसमें ज़्यादा कोई लिखना की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ज्योमेट्री है तो उसमें आप कर सकते हैं कि लेट लाइन बी ए बी, लेट द एंगल बी ए बी सी, तो ये आपको लिखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। रीजन भी देना है अकॉर्डिंग टू CPCT। तो इस प्रकार से आपको देना होगा। लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन करके मैं बताऊँगा अगले क्लास में। अगले जो है आपका जो मेरा पीरियड होगा उसमें आपको कुछ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का हो या आपको साइंस का हो या आपको इंग्लिश का हो, आप आंसर कैसे देंगे इस प्रोसेस को मैं बताऊँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, यू कैन बी ऑल्सो वेरी वेल एंड योर गुड नाइट।